Sir, good afternoon, sir. Program.
I request all those who are standing to please be seated. Can I request all of you to please keep your mobile phones silent? Please give a big round of applause. We have our esteemed guests arriving. Please give a big Mr. Rakesh Mr. Ramesh, Dr. Mr. Let's welcome all of them again with a big applause. सीटिंग में हेल्प करा जो भी गेस्ट है आप यहाँ पे बेल में बैठे आने के बाद बाहर के गेस्ट को अंदर बैठे बोलते रहो लेट Dear students, please vacate the passage. Let's there are three honored Bhargavya members is witnessing such dignitaries who are stalwarts in their own field. We are extremely proud of them and honored to have them today with us. आइए सर I request all faculty to be seated. आपका ही बंदा हुआ तो
सब आदमी करिएगा। Few students can shift to the left side. लाइट हो ग्राउंड आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं प्रोफेसर खुर्शीद, कल्चरल कोऑर्डिनेटर, प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इस शेर के साथ के बजाय सीनों के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। तो इन लम्हों को मुख्तसर करते हुए मैं अपने साथी डॉक्टर सहल गरी से दरखास्त करता हूँ कि वो आगे का प्रोग्राम वो करें। शुक्रिया खुर्शीद। Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Chief Guest Mr. Manoj Yadav, IPS, distinguished guests Mr. Rakesh Asman, IPS, Mr. Amrit Lagoon, IFS, Mr. Ashok Kumar, IPS in absentia, Mr. Amit Kumar Pandey, IPS, Registrar Jamil Mundar, Dean Students Welfare, Cultural Coordinator, and all esteemed dignitaries on the dais and on the dance. A very warm welcome to each one of you at this special occasion, the release of the book Advanced Nemesis, organized by the Literary Club Jammu Mundar. We are honored to have amongst us a gathering of esteemed dignitaries, scholars, and literature enthusiasts. This evening, we come together not only to celebrate the release of a remarkable book, but to acknowledge the literary brilliance that it brings forth. एक शेर आप सबकी नजर करना चाहती हूँ। दिल के तमन्ना हजारों दिन थे, आज के दिल के तमन्ना हजारों दिन थे, आज हर दिन में मुरादों की घड़ी आई है, आज पीता फिर हजारों में आज पीता बड़ी देर के बाद है। To officially begin this auspicious occasion, let us seek blessings with the recitation of the Holy Quran. May I please request Mr. Salman, student of PUS final year, to come forward to recite a few words from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
إن الله شديد العقاب. Allah said, and cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah. Indeed, Allah is severe in penalty. Assalamu alaikum. Now, let us immerse ourselves in the pride of Jamia Hamdard as we present the Hamdard Taram. Let's put our hands together to welcome the Hamdard Taram team. से गए हम दर्द है, ये दर्द गए हम दर्द है, हम इसके चांद सितारे हैं, ये दर्द से गए हम दर्द है, दर्द है, ये दर्द से गए हम दर्द है। जिस ख्वाब की मंजिल हिकमत है, जिस ख्वाब की मंजिल हिकमत है, ये शम्मा सी शम्मा जिसकी के जहां में शोहरत है, जिसकी के जहां में शोहरत, इस वक्त सब तारे बनकर चमकेंगे, मानिंद गुलों के महकेंगे, महका की सूरत चमकेंगे, ये दर्द से गए हम दर्द है, ये दर्द से गए हम दर्द है। दौलत वो लाफानी है, दौलत वो लाफानी है, हिकमत का पैगंबर था, इस मेरे चमन का बानी है, इस मेरे चमन का बानी है, हर वक्त यहाँ पर अखलाक मोहब्बत पाया, हर सिमत जमाले यहाँ फूलों की तरह मुस्काया, ये दर्द से गए हम दर्द है, ये दर्द से गए हम दर्द है, ये दर्द से गए हम दर्द है। इस रात मुसाफिर का परचम, इस रोशन शम्मा की खातिर से टकराएंगे, से टकराएंगे, सरसम से शादा, अल्लाह दुआ ये मेरी, इस गुलशन पर ना जाए, अल्लाह दुआ ये मेरी, ये दर्द से गए हम दर्द है, ये दर्द से गए हम दर्द है, ये दर्द से गए हम दर्द है। Thank you for the melodious Tarana. Now moving towards the next segment of the program. We are honored and grateful to have such stalwarts in Jamia Hamdard. We would now like to welcome and felicitate our dignitaries on the dais, whose presence adds grandeur to this event.
सभी खुसूसी मेहमानों के लिए बस इतना कहना चाहूंगी, कितनी हसीन, कितनी मुनव्वर ये शाम है, कितनी हसीन, कितनी मुनव्वर ये शाम है, लगता है जैसे खुल्दे बरी में कयाम है। मौजूद है मनोज भी, राकेश भी, अमर और अशोक। मौजूद है मनोज भी, राकेश भी, अमर और अशोक। अमृत भरी ये शाम तो इन सब के नाम है। किसी शायर ने कहा कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसको याद करूं, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसको याद करूं, यहाँ तो जो भी बशर है बहुत कमाल का है। Professor Dr. M. Akshar Alam to present a memento and planter as a token of gratitude to the chief guest for the event, Mr. Manoj Yadav, IPS, Director. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor to felicitate our distinguished guest, Mr. Rakesh Asthana, IPS Special Director, Center Bureau of Investigation. Please give him a big round of applause. Former Police Commissioner Delhi. Former Police Commissioner Delhi. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor to felicitate our distinguished guest, Mr. Amrit Lagoon, IFS and Professor of Practice in Jamia Hamdard. We are honored to consider the banquet. We express our heartiest gratitude towards none other than the keynote speaker of the day, Dr. Anand Kumar Pandey, IPS. Now, I would like to request our Dean Students Welfare, Professor Dr. Reshmi Nasreen, to kindly felicitate our Vice Chancellor, Professor Dr. M. Shah Alam. Because this condition that all of us are growing each day. Now, I would like to request our Chemistry Coordinator, Professor Khurshid Ahmed Ansari, and Dean Students Welfare, Professor Dr. Reshmi Nasreen, to felicitate our registered examiner, Dr. F. E. Sikandar. Now, I would like to request our cultural coordinator, Professor Khurshid Ahmed Ansari, to felicitate our Dean Students Welfare, Professor Dr. Reshma Nasreen. We would really like to thank each one of you for being here with us. Today, we have amongst us one such person who inspires us every day through her life, words, and deeds. We are profusely elated to have Professor Dr. Reshma Nasreen, Dean Students Welfare, Jamia Hamdard, to welcome our dignitaries and guests. Please
I would like to request her to give the recognition to the give everyone. Good evening, Assalamu alaikum. Our chief guest of the day, Shri Manoj Yadav sir. Just now I learned that sir is we are very junior to sir. Sir has done his MBA from art school. So I'm in the Alex department. All of you have to give 90-degree salam and area. And our special guest, Shri Rakesh Asthana sir, special director, CBI and former commissioner of police, Delhi. In absentia, Shri Ashok Kumar, Sir, Vice Chancellor, Sports University, Haryana. Professor of Practice, Shri Amrit Lohni, Sir. Ex-Ambassador of India to Greece. Honorable Vice Chancellor, Sir. First Lady of Jammu. A Registrar, Sir. COE, Sir. All the respected deans, chief proctor, all the professors, all the esteemed guests who have joined here. Here, Shri Rakesh, here, Dr. Amar Pandey, sir, IPS and former DPP Karnataka. And this is the release of Sir's second book. And now again, I feel privileged to share my hometown. So it's from what I did. And so I thank you for creating such a bevy of intellectuals and achievers on the dais. I take this opportunity to welcome you all to the extremely lush greens environs of Jamia Hamdard. Jamia Hamdard, which believes in rejuvenation, which believes in regurgitation, which believes in overall development of all its stakeholders, especially the students. So in this green environment, we have got no less paucity of fresh air and fresh thoughts. Again, I welcome each one of you. Honorable Vice Chancellor, sir, through his extremely dynamic leadership, has created a system wherein he is leading by example. I just can tell, since morning, sir has had 2 meetings. This is the third one that he has joined, and he expects no less from all the other stakeholders. So that is the kind of dynamism that Jamia Hamdard has, and we are very, very proud of being Hamdardians, and we are very proud to state this, that Hamdard has been quite well able to its times. When we are talking about sustainability and rainwater harvesting and taking care of the environment, all this Hamdard started at least 25 years ago. We have got the green certification. All our processes are strived towards sustainability. And if you just manage to do a random check at any office, you will find that they diligently using all the rough papers are being diligently used in that we want to propagate. I have been honored to be this fortunate to welcome each one of you, sir. As the Dean Students Welfare, it is my responsibility and the responsibility of my team under the guidance of Vice Chancellor to create an environment where there is a confluence of ideas, there is a nurturing of future leaders, holistic development of all the students. And therefore, the Literary Club is proud to organize and coordinate this event. And the sir was asking me, that is this a capital audience? I told sir, this is the right audience. Each one of them will be
So we have got students from international studies, we have got students from our Hamdard Institute of Legal Sciences and Research, we have got the dean also sitting there and asked. And all the students, we have got mass comm students, mass comm students. So the target audience is young, we have a lot of activities on clubs which caters to the co-curricular and curricular development of the students. So Jamaica thrives on these basic principle of holistic development. And I think what is very obvious in the audience is you can see the gender parity. And that is a point that discussing. So once again, I will call you. We are looking forward to your demo with this whole. Thank you so much. Thank you so much. We are privileged to have with us distinguished personalities from various fields who will share their insights. Let's begin with an address by Mr. Amrit Kapoor. Sir is from 1989 batch of UFS, same as that of the FFP. He has served in various countries for the government such as Qatar, France, Algeria, and Philippines, and has served as an ambassador to Yemen, Sudan, and Greece. In addition, he did a stint as the staff secretary. In the Ministry of External Affairs, he served at various divisions, including Joint Secretary and Additional Secretary in Consular, Passport, and Visa Division, and held the post of Protector General of NGOs. He retired at the level of Secretary to Government of India. We are honored to have him as a professor of practice in Jammu and Kashmir. I'd like to Mr. Happy Sabha, इस शेयर के साथ करना चाहूंगी आपका आना मुबारक आप हम तक आ गए आप आ गए अपने अखलाक और मोहब्बत से दिलों पे छा गए इससे बढ़कर और क्या होगा मोहब्बत का शरफ इससे बढ़कर और क्या होगा मोहब्बत का शरफ खुशबू से वादिए हमदर्द को मिला दो Good evening. Thank you very much. I wish I could also have started with some share of Sati. But I didn't. So thank you very much. The chief guest, Mr. Manu Yadav, one of my good friends. I guess it is Hannah, the Vice Chancellor. He can come to be here. Ashok Kumar, the dear friend, not join. The Star and Dean students is there. Thank you very much. And also, in the audience, some my new friends, we have the same batch. We have here Mr. Sanjay Kundu, who was DG Himachal recently, and he represented his state in an international organization and we do safety and silver medal. So we Dharamshala, beginning of my career, where we have the office of Minister of Affairs. And Sanjay Kundu, we were all starting a career. He was ASP there, along with Mr. Sanjay Murthy, also the Secretary Higher Education and now people of India. So it goes back to Mr. Kishore Ravi. So also we have been DG in Tamil Nadu. He's taken voluntary retirement, and now I take you many activities. I would like to embarrass you, but yes. So me and Chandran, so we live in academy. So I would be very happy starting that. Before that, the university days when preparing the civil services, I remember when we filled the form
the three of us, myself, he and another person was followers in that time you could work and fill manually. So our roll number followed 30, 40. These are 30, 40, Kosovo. They were being in the war like situation. They would have let you get away from the place. By chance or luck or bad luck, they happened to be having weekends. Um, give out in 5. So that continued years even of meeting this notorious fellow, Ravi Pujari, and it so happened that Ravi, I happened to be in the ministry, and so he was really very nice that time. He claimed that this fellow has been in the list for many people since 26 years. He was a notorious fellow, started with the cricket and how they die in Mumbai. And he has spread his tentacles. Many people were affected from big shots, builders to politicians to street stars. So, it was so, and he was taken the Sudan 86 years ago. It is the photo and he was different. He has changed the name, and he has a fingerprint. So I think we let us start with part, and then he worked with me then we talk like the in Ghana, education in Spanish was also concurrently to keep a person. So we so we one day looking into the competence and works for the country, he has because an investor being in the post. And distractions are so much. To get them into line with thinking, this is something so make them and we make them motivated. This is very important with this book. And also this is a population which has to be kept very risky. Because we're going with very good skill. So ultimately, I would it is good one is encouraged to read the book. Yes, what happened is I would just like to comment that he after a long case once he nearly ordinary Burkina Faso, but perhaps they ran away to Senegal. So efforts were waste. So the case was there. Applicant efforts and for people taking and he get away and to Senegal and we so that they can conversations for planning, etc. And again, not going into the details, ultimately he was nagged. In the most unlikely case, he was having a haircut in the and the Senegal police with that they went and they said Ravi Puchari, though he was taken another issue, he denied it. So immediately he got a shock. My reaction really put homemade like then and this was taken. But then once in this the distinguished police people are there, when in India, so they gave them more of the respect to hold me. And he was arrested. We thank the Senegal government who gave us cooperation in having percent because if the cooperation is not there, then it's not. Then we said if that
to bring that fellow back to my parents. Again, then I had to come to successfully he was brought back to India. He went jail, he gets the release and believe that he gives to him and that he very difficult to keep the book. So actually, you would be eager to hear those things from the Mongol chapter. That's a very interesting. The railway that the police Haryana, if the two citizens are in the island, and Mr. Which area would take CBI also is Syria. So they have a book to share. They will raise up your case, perhaps you will have questions. Thank you very much. Thank you, sir. We are honored to welcome Mr. Rakesh Asthana, a distinguished IPS officer, the 1984 batch from the Gujarat Cabinet. Throughout his illustrious career, Sri Asthana leading the force until his retirement in July 2022. His career is marked by his unwavering commitment to justice and integrity. He has been instrumental in investigating significant cases such as the Purulia drug case and the 2008 Ahmedabad bombings. In recognition of his exemplary service, he has been honored with the police medals for his meritorious and distinguished service. His leadership and dedication continue to inspire many in the field of policing and public service. सर का इस्तेमाल एक शेर के साथ करना चाहूंगी। ताजिंदगी गरीबों के वो काम आए हैं, ताजिंदगी गरीबों के वो काम आए हैं, उल्फत से नफरतों के अंधेरे मिटाए हैं। हर एक जुबान पे आपका चर्चा है इसलिए, हर एक जुबान पे आपका चर्चा है इसलिए, इल्मों मुल्क के आपने दीपक जलाए। यार बोलना नहीं था, तूने धोखा दे दिया। Anyway, Manoj Yadav, the chief guest, DGRPF, Honorable Vice Chancellor, Umar, Amrit, Dr. Sikandar, man, distinguished gathering. First of all, thank a lot for calling me here in the lead of this wonderful book. I have read it. It's very interesting because I could feel that the policemen there in the book. And it has been wonderfully written and we completed it in 2 sittings. Started last night. This morning I finished it. We saw Mr. Amrit go and I just told him, the first thing I told him, you are mentioned in the book. I've read it and your efforts in having this gangster has been tremendous. Now, this Ravi Pujari has been tormenting me also because I have not been knowing about it. Not me personally, but I was police commissioner in Surat in 2011, 2016. Sometimes at 15, it was the end of the career. People started coming to me in the diamond industry that they're receiving threat calls from this man. And few of them had shared money also. Anyway, a little part of it I was associated for the investigation and of course tracing. But I was not in touch with you, I was in touch with the Bombay crime business. And we were trying to locate him because my impression was that
He is a man of Dawood Ibrahim and he is mostly active in Mumbai. But when he was caught and when I read it in the newspaper, then I realized that this man actually belongs to Karnataka. His activities were there in Karnataka a lot. And then he fled from the country and he was running his network from abroad. Investigating a serious crime or investigating a special crime. We call in CBI such crimes as special crimes, not the typical conventional crime or anti-corruption crime. But this particular crime, underworld and extortion racket, killings, etc. The investigation requires a lot of depth handling. And it is not a matter of few minutes or few days in which you can nab a person and put him behind the bars. As you go through the book, you will find what all efforts Amar and his team has made to locate this man. Because making a call for extortion and to locate that number, I must tell you it is a Herculean task. It's only when a criminal commits a slip, he is caught, and that is what he has done it in this. As an investigator, I always believe that no crime is a perfect crime, and any criminal who is committing a crime leave behind some trail. And as an investigator, it is up to us to find out that small piece of evidence or trail and to follow it. So this book, if you read, you will find the meticulous and depth handling of this criminal, crime committed by this criminal, and the tedious efforts undertaken by Amar and his team in nabbing him. And finally, the nab was so much. Mr. Amrit was mentioning is from the saloon where he has gone for the haircut. It was really very exciting. I believe that someday you will be impacted by some Bollywood producers or Netflix producers. You will already done. Okay. Perfect. Thriller for extraditing a person is a big complex issue. I am talking about it because I've handled one of the most difficult extradition in the case of CBI. But extraditing a criminal, getting it clear from the country where he has been caught and bringing him back to the country is not an easy task. A lot of channels are there. MEA is actively involved in that. Local police is involved in it. Well, judiciary is involved. So unless the paperwork is perfect, extraditing a criminal like this is not possible. And I must congratulate Amar. Excellent paperwork which he has done. And that's all for you for writing such a wonderful narration of this song. He is right behind the bars now and he must be giving you a lot of So, sir. Next, I would like to request Mr. Manoj Yadav, IPS Director General, Railway Protection Force, to come forward for his delivery. Mr. Manoj Yadav is an IPS officer of the 1983 batch Haryana Cadre. Is a distinguished leader in Indian policing. He is a gold medalist in economics
and MBA from Aligarh Muslim University. He excelled in very prestigious awards. His career spans anti-militancy operations, key postings in Chandigarh Police, and serving as India's contingent commander at the UN Commission in Kasur. With an illustrious tenure at the Intelligence Bureau, he later served as DGP Haryana and DG Investigation at the National Security Commission, an expert in comparative religion, radicalization, and leadership studies. He is also an long-distance runner and the author of History of Haryana Police. Recognized with multiple national and international awards, he currently serves as the Director General, Railway Protection Force. We are honored to have him as the chief guest this evening. Sir की शान में रहबर कहूँ, रफीक कहूँ, रहनुमा कहूँ, रहबर कहूँ, रफीक कहूँ, रहनुमा कहूँ, टूटे हुए दिलों का तुम्हें आसरा कहूँ, सोए हुए नसीब जगाएं, सोए हुए नसीब अपने इंसानियत का क्यों ना तुम्हें पेशवा कहूँ। और इन मानवीय संवेदनाओं में मैं और एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि वो आए बस मुझे सर आपकी नस्ल, वो आए बस मुझे इतना तो मील ले जाना, फिर उसके बाद राहों में उठनी। अंदाज़े बयां गच्छ बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गच्छ बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी। जामिया हमदर्द के शेखुल जामिया प्रोफेसर मुख्तार आलम साहब, हमारे सीनियर और फॉर्मर DGBSF, DG नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फॉर्मर CP दिल्ली जनाब राकेश अस्थाना साहब, एम्बेसडर अब्दुल लोगन जो मेरे बैचमेट भी हैं, दोस्त भी हैं, आज की जिस किताब के विमोचन के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसके ऑथर जनाब अमर पांडे साहब, रेशमा नसीर जी, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, और सामीन में बैठे हुए मेरे बैचमेट जनाब संजय कुंडू, फॉर्मर DGP हिमाचल प्रदेश जनाब VK रवि, मेरे दोस्त राजीव भटनागर साहब, हमारे स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी साहब, और हमारे सीनियर यहाँ जामिया हमदर्द के असातिज़ाए इकराम, यहाँ पे मौजूद जनाब तालिबिन और ख़वातीन हज़रात। मेरे लिए बहुत इंतहाई खुशी का मौका है कि मुझे आज मुझे आपने इस कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी के रूप में आपने मुझे यहाँ तस्लीम किया और बुलाया। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि जामिया हमदर्द जैसे इदारे में आने का आज मुझे पहली बार मौका मिला जिंदगी में। अक्सर मैं इसके बाहर से गुजरता था और सोचता था कि अंदर से ये इदारा कैसा होगा। वैसे यहाँ 1989 में इसको कायम किया गया और इतना खूबसूरत कैंपस और इसके इतने ब्राइट एंड यंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स जो यहाँ मौजूद हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और मेरा थोड़ा सा इनडायरेक्ट ताल्लुक रहा क्योंकि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था उस वक्त वहां पे जनाब सैयद हामिद साहब वहाँ के वाइस चांसलर थे, जो कि एक IAS अफसर थे, यूपी काडर के, और एक बहुत ANU के तारीख में एक बहुत मुश्किल वक्त आया था। उस वक्त उन्होंने उसकी वो वहां पहुंचे और उन्होंने हमारे एक बरस को वेस्ट होने से बचाया। कैंप बहुत पीछे चला गया था हमारा, लेकिन उन्होंने जिला प्रशासन के ताउन से और एक बहुत नो नॉनसेंस अप्रोच लेते हुए उस इदारे को सही रास्ते पे लाए और वक्त से वहां से पास हुए। तो बाद में मुझे बहुत खुशी हुई कि वो
यहाँ पे चांसलर रहे लंबे वक्त तक, उन्होंने स्कूल भी कायम किए। तो एक दफा मैं उनको मिलने आया था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और उस वक्त वो जामिया हमदर्द जो स्कूल है संजम विहार में, वहां बैठते थे। तो ये तो रहा मेरा जो ताल्लुक आपसे रहा। अब जो आज का टॉपिक है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये किताब है ए डॉन्स नेमेसिस, ये कहानी है किस तरह कर्नाटक पुलिस ने एक एफर्ट किया, जबरदस्त एफर्ट अमर पांडे साहब की क़यादत में, और उन्होंने एक बिल्कुल गुमनाम आदमी को, जिसका कोई पता नहीं था कहाँ है, किस मुल्क में है, किस नाम से, किस पासपोर्ट पे रह रहा है। इट इज लाइक सर्चिंग फॉर अ इनविजिबल नीडल इन अ हेयरस्टाइल। तो ये हम लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं, और हमने अक्सर देखा है कि कई बार ऐसी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं और आपको बुला के आपके सीनियर कहते हैं ये काम आपको करना है, और यू आर टेकन अबैक बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क दैट इज बिफोर यू। और ये किताब जो है मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि ये कॉप एंड रॉबर स्टोरी है, इसलिए कि इसमें बहुत से दर्स हैं, बहुत इसमें हमारे लिए लेसन है। सबसे बड़ी बात है एडियरेंस टू द लॉ। दिस बुक गिव्स ए क्लियर मैसेज कि अगर आप अपने मुल्क के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उसके आइन को फॉलो नहीं करेंगे, लोगों पे जुल्म करेंगे, तो one day the law shall catch up with you। और ये बहुत एक बड़ा काम है, चूंकि एक्स्ट्राडिशन, जैसा कि राकेश सिक्ताना साहब ने कहा, ये आसान काम नहीं है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि सिर्फ कर्नाटक में रवि पुजारी के खिलाफ 6 लोग बदले थे। कर्नाटक में सारा काम कन्नड़ भाषा में होता है क्योंकि वहां की स्टेट लैंग्वेज है। अब वहां के सेनेगल की अदालत को कन्विंस करना है कि वहां पे सारा काम फ्रेंच में होता है, यानी हजारों पेजेस उसको पहले कन्नड़ से अंग्रेजी में उनका तर्जुमा कराया गया, उसके बाद अंग्रेजी से उसका फ्रेंच में। और कानून ऐसी चीज है कि जरा सी छोटी सी कमी रह जाए और हर कागज को आपको ऑथेंटिकेट कराना। इन्होंने अपनी किताब में एक बहुत दिलचस्प वो दिया है कि इनकी सीक्रेसी भी मेंटेन करनी थी, और एक मजिस्ट्रेट से कागज ऑथेंटिकेट कराना था, और मजिस्ट्रेट साहब के पास ये खुद गए बिना बताए कि डीजीपी इंटेलिजेंस जा रहे हैं, आम आदमी की तरह उनके कॉरिडोर में खड़े हो गए, और उसके चपरासी ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, पर ये बताना नहीं चाहते थे कि अगर ये बता देते कि डीजीपी आए हैं तो खबर लीक हो जाती। तो ऐसे कई बड़े दिलचस्प किस्से की किताब में है, लेकिन पता ये लगता है कि हम सबसे बड़ी चीज जो जिंदगी में है वो है टीम वर्क। ये जो इन्होंने हासिल किया, इनकी ब्रिलियंस थी। ये उस फिल्म के डायरेक्टर थे, मगर उसमें बहुत से असिस्टेंट आर्टिस्ट थे जिनके ताजुब के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, चाहे वो हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस हो, चाहे इंडियन जो हमारा लीगल सिस्टम है, वकील हैं, पुलिसमैन हैं जो रिसर्च करते हैं, इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क है। तो इस किताब से आपको जो दर्श मिलेगा वो ये है कि कोई भी काम मुमकिन है अगर आप एक सिलसिले तरीके से सोचें, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, एक अच्छी टीम इकट्ठा करें और पूरे पैशन से उस पर लग जाए। और इसलिए मैं इस बुक को रिकमेंड आप सभी को करता हूं। और वक्त मुझे 5 मिनट मिले, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़े हम शायद 5-10 मिनट लेट भी चल रहे हैं। एक जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, या जो यहाँ मौजूद तालिब इल्म है, आपको हमने बताया कि मैं DGPSF DG NCD रहे हैं, राकेश साहब अमर पांडे साहब रहे, इन्होंने इतना बड़ा क्रिमिनल को लाके डिलीवर किया, संजय कुंडू साहब हैं, DGP BK रवि साहब, और तिवारी साहब है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा जो बच्चे यहाँ पे हैं कि जब आप अपनी कैरियर चॉइसेस के बारे में सोचें तो गवर्नमेंट सर्विस को जरूर कंसीडर करें और UPSC के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि
मुझे आपके शेफुल जानी साहब ने बताया कि इन्होंने यहाँ पे एक कोचिंग एंड गाइडेंस सेल सिविल सर्विसेज की अकेडमी, कोचिंग एंड गाइडेंस अकेडमी करी है। इसमें विशेष तौर पे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने SNA रिजवी साहब के क़यादत में एक सिलसिला शुरू किया है। तो आपको फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा जिंदगी में बहुत बड़े काम करने का, जिस शोबे में भी जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में कैनवस बहुत बड़ा होता है और आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। आप जैसे कि अमर पांडे साहब ने किया, ही एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। एक क्रिमिनल, एक वैशी जिसने दर्जनों मर्डर्स किए थे, लोगों से पैसा वसूला था, कॉन्स्पिरेसी की थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो अपनी सारी दौलत इकट्ठा करके बाहर बैठा हुआ है, बाहर से क्राइम को अंजाम दे रहा है। अल्टीमेटली इस सोसाइटी में कोई भी माशा ये मैसेज नहीं दे सकता कि पेज टू इंडल्ज इन क्राइम, वरना हर आदमी सोचेगा कि मैं क्यों मैं क्राइम करता हूँ और पैसे कमाऊंगा, फिर जाके किसी मुल्क में आराम से रहूंगा। हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्ष में एक बहुत अच्छा सिलसिला कायम हुआ है कि हमने बेहतर रिलेशन बनाए हैं बाकी दुनिया से, और हमारे जो भी आउटलॉज हैं जो दूसरे मुल्कों में हैं, उनको हम ये बता रहे हैं कि कानून हिंदुस्तान का जिंदा है और आप कहीं भी जाए आपको हम पकड़ के लाएंगे। और इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि 2019 में किया, आज उसको 5 बरस पूरे हो गए और उसके खिलाफ इतने केस है कि वो हमेशा जेल सलाखों के पीछे रहेगा। और ऐसे बहुत से नाम मैं बता सकता हूँ। और दूसरी बात, ये जो कहानी है ये दूर की नहीं है। आज भी जो गैंगस्टरिज्म है हमारे मुल्क में सर उठा रहा है। सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर अगर आप अखबार पढ़ें रेगुलरली तो आप देखेंगे कि बहुत से गैंग्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ का गैंग है, कपिल सांगवान, नंदू का गैंग है, मंजीत महल, कौशल। जब मैं DGP था, एक ऐसे क्रिमिनल था हरियाणा का, कौशल, चौधरी पास गांव है गुड़गांव में वहां का, और वो दुबई में बैठ के वही सब काम कर रहा था जो आपने किया। हरियाणा के लोग, कर्नाटक पुलिस, हमारे साउथ इंडिया में लोग बहुत लॉ अबाइडिंग होते हैं। इन्होंने बहुत लंबा प्रोसेस पकड़ा और उससे लाए। हमने हरियाणा का डायरेक्ट सिस्टम लगा के हम है इसको उठा के ले, तो और हमें दुबई पुलिस का बड़ा ताउन मिला। मगर मुद्दा यह है कि आपको सरकारी नौकरी में, चाहे आप IAS अफसर बने, यहाँ पे हमारे IRS सीनियर यहाँ पे मौजूद है मिस्टर झा, एक हमारे इनकम टैक्स में बैचमेट्स हैं जो हजारों करोड़ रुपए हर साल जो लोग टैक्स लॉस के कानून की पालना नहीं करते उनसे वसूल के सरकार को देते हैं। तो आपको एक बहुत वसी कैनवस मिलेगा काम करने के लिए। और आप इतने अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, UPSC की तैयारी करें और मुल्क की और मुल्क के रहने वाले लोगों की खिदमत करें, अपने आइन की हिफाजत करें। इस मैसेज के साथ मैं अब अपनी बात को खत्म करें। ठीक है। और साथियों, सितारों की इस कहकशां में दो और हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं, अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। कमल नारायण चौबे जी, पूर्व DGP झारखंड, और उदयन बनर्जी साहब का जो IOG CISF है। आपकी जोरदार तालियों से स्टूडेंट से दरखास्त करता हूँ कि बच्चों जब कोई बोल रहा हो तो बीच में से उठने की कोशिश न करें, वरना आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मधुर तिवारी जी। मधुर तिवारी जी को Can I please request Mr. Madhu IPS additional director, additional DGP. Special commissioner, please.
सारे हमारे न्यूमेरी सीनियर्स, सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ सबको, और यहाँ पे ऑडियंस में भी हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर पुलिस में अक्सर कहा जाता है कि अंकुश होना एक अच्छी बात नहीं होती। आज मुझे अंकुश कर लिया गया, was not supposed to speak है, और मुझे अभी I'm totally taken by surprise। ये किताब अभी मैं जरूर पढ़ूंगा, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन रवि पुजारी के बारे में मुझे मालूम है कि ये एक सेनेगल में बैठा ऊपर यहाँ पे एक्सटॉर्शन रैकेट और प्लस यहाँ पे क्राइम वगैरह करवाता था, और 19 में जब इसका एक्सपेक्टेशन हुआ था तो एक बहुत बड़ी खबर बनी थी, और हम लोग सोचते थे कि ये कितना बड़ा काम किया है कर्नाटका पुलिस ने। और आज जब जब जैसा थाना सर ने भी अपने उसमें बताया, अपने प्रेस में, और रघु सर ने बताया कि कैसे उसको किसी बार्बर शॉप के पास वो रह रहा था, किसी गलत नाम को मतलब कि अज्यूम करके, और उसको वहां से पकड़ के लाना बहुत ही एक उस समय हम लोग ने जो देखा था और पढ़ा था, उससे ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंडियन पुलिस की। और आज उसको जो है किताब में बांधा है उस पूरी कहानी को। इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सर मैं जरूर पढ़ूंगा इस किताब को, और इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो, फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स केस कंप्लीटेड। सर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपका अपने इस को क्रॉनिकल किया है इस पूरे एपिसोड को, ताकि न केवल पब्लिक को पता चले कि कितना पेचीदा मसला था, उसको कैसे आपने सॉल्व किया, पर हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी सर एक बहुत बड़ा ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, या लर्निंग वो रहेगा, पॉइंट रहेगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स केस को कैसे करें। थैंक यू सो मच। और साथ ही हमारे खास मेहमान आनंद कुमार जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे दरमियान है। मैं जामिया हमदर्द की तरफ से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Next is the most awaited address by Dr. Aman Kumar Pandey, IPS, DGP Karnataka. He will present his PhD from National Law School of India University, Bangalore, and last served as the Director General of Police and Director General of State Disaster Response Force and Commanding General of Home Guards and Director Civil Defense. His awards include Police Medal for Gallantry and the President of India Medal for Distinguished Services and the Chief Minister of Karnataka Gold Medal. We are honored by your gracious presence, sir. आपका इस्तकबाल में मैं क्या कह सकती हूँ, बस इतना कहूंगी कि मंजर है ये खुशी का बड़ा एहतमाम है, मंजर है ये खुशी का बड़ा एहतमाम है, अमर आपके नाम के खुशियों की शाम है। अल्लाह तुम्हें अता करे खुशियों भरी हयात, अल्लाह तुम्हें अता करे खुशियों भरी हयात, हर वक्त ये दुआ है, यही एक कलाम है। कल की शाम को अमर कुमार पांडे जी से फामल गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि इनके अंदर एक शायर है, एक कवि है, तो उसी जज्बे को या उसी एहसास का तर्जुमानी करता है एक शेर अहमद फराज साहब का आपकी नज़्म कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से दूर चढ़ते हैं, ये बात है कि चलो बात करके देखते हैं। There are some questions also for you, sir. If you can, वो भी देख लें, हमारे पास बोल रहे थे, there are students and teachers also. Teaching lab, they are
Just move it with the cursor. I can. Distinguished guests on the dais, respected Honorable Vice Chancellor, Jamia Hamdard University, Afsar Sir, most distinguished, most respected, and much before he became a police officer, he was a professor. And we were students in the university, and later served Government of India, Government of Gujarat in many distinguished positions, including Commissioner of Police Delhi, Chief of Border Security Force, Chief of Narcotics Control Bureau, and perhaps, sir, your stories would make an encyclopedic series on crime and its detections. Most distinguished Rakesh Asthana, sir. My very esteemed friends, batchmates, and today's chief guest, Mr. Manoj Yadav, very distinguished police officer, very fine human person, दिल का बंदा है। आज आपके यहाँ चीफ गेस्ट बन के आने से आपको कितनी खुशी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। मनोज यादव की जब हम ट्रेनिंग में थे तो इनके मुखार बिंद से हम हमेशा शेर व शायरी सुनते रहते थे। ज्यादातर तो समझ नहीं आती थी बातें, क्योंकि इनके लफ्ज और इनके जो अल्फाज हुआ करते थे बड़े विशेष तरह से ये कहते थे, उसको बहुत अच्छे अंदाज से कहते थे, लेकिन हम उलट थे तो समझ नहीं आता था। तो मुझे लगा कि हमदर्द जामिया यूनिवर्सिटी में उनके मैच के बहुत सारे शख्स यहाँ उनको मिलेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे स्ट्रगल के दिनों के मित्र और शर्मा जी की चाय की दुकान पे चाय पीने में साथ देने वाले, और जिन्होंने सर्विस के अंत समय तक साथ में दी, परम मित्र अमृत बुगुल, इन्होंने सर्विस की तैयारी में भी साथ निभाया और ये नमाज को पकड़ने में भी साथ निभाया, बड़ा रेयर। Distinguished registrar of the prestigious university, Dr. Sikandar साहब, और मेरे गांव की निवासी यूनिवर्सिटी की टीम, हम दोनों भागलपुर से हैं। सारे हमारे अग्रज बड़े भाई बहुत ही विशेष श्री कमल नयन चौबे जी, जो बीजी झारखंड में हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन ही नहीं किया, बल्कि मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। आज यहाँ पर वो भी उपस्थित है, ये मेरे लिए बड़ा ही सुखद अनुभव है। हमारे सारे बैचमेट्स, सभी पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है। और इनकी कहानियां मेरी कहानियों से बहुत ज्यादा रोमांचक रही। मुझे उम्मीद है कि वो भी किसी दिन इस दिशा में जरूर प्रयास करेंगे कि अपने अनुभव को वो लेखनी के माध्यम से बाहर लाएं और आने वाली पीढ़ी को उनका उससे मार्गदर्शन मिले।
हमारे बैचमेट्स यहाँ पे आज उत्तर प्रदेश की सब बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में शांति बहाल है, तो इस मुहिम के मुखिया और इस शांति बहाली के प्रयास में वहां के प्रशासन का सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ था वो आज हमारे बीच है। मैं संजय कुंडू साहब हैं, मेरे परम मित्र बीके रवि जी हैं, मेरे क्लासमेट्स भी आए हैं आज यहाँ। जब हम कॉलेज में आपकी तरह बेकार घूमा करते थे, ना रास्ता पता था, ना मुकाम का कुछ अंदाज था, और ना ही सिर्फ मस्ती थी। तो उन मस्ती के दिन के हमारे मित्र प्रशांत सभी यहाँ हैं, और आज पहली बार हमारी बड़ी दीदी पहली बार मुझे मंच पे बोलते हुए सुन रही है। बदमाश की बात करने की जिम्मेदारी कुछ अधिक सी है। मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि आज मैं कुछ ज्यादा अच्छी बातें करता हूँ। संदर्भ कुछ ऐसा है, तो इसके पहले कि मैं कुछ बताऊं ये सारी किताब को कैसे एक दे पाया, मुझे कैसे इसको बाहर लेकर आया, या इसके पीछे जो किताब में जो कंटेंट है उसके बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ 2 मिनट का आपको कुछ मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए ही बनाया है। तो एक दिन पूरा लगा है कि आप 2 मिनट दे दीजिए। तो ये किताब का शीर्षक है, और ये मेरी पिक्चर है जब मैं दूसरे तरह के वस्त्र पहनता था। तो ये बदमाश के बारे में एक इंटरपोल संस्था है, इसका कुछ कहना है कि जब कुछ लोग मिल करके बड़ी बदमाशी करते हैं और उससे पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं उसको। ये बड़ा कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरी जर्नी में मेरा मार्गदर्शन करता है। यू आर द वे एंड द वेफेयर, ये खलील जिब्रान साहब की कोट है उनकी प्रॉफिट किताब से, जहां उन्होंने क्राइम और पनिशमेंट में उन्होंने ये उनका ये वाक्य सम्मिलित है कि आप ही रास्ता हो, आप ही रास्ता खोजने वाले हो, और आप ही को ये काम करना है। तो जैसा साहब ने कहा कि क्रिमिनल जो है कुछ छोड़ के जाता जरूर है, कुछ तो होता है जिससे उसका पता लगता है, हमें उस चीज को। There is no den in the wide world to hide a rogue. Commit a crime and the earth is made of glass. Commit a crime and it seems as if a coat of snow fell on the ground, such as reveals in the woods the track of every partridge and the fox and squirrel. तो चोर कुछ भी करे, कुछ भी हेरा फेरी करे, कुछ तो छोड़ जाता है जिसको हमें खोजना पड़ता है। तो ये जो बड़े बदमाश होते हैं उनके कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स रहते हैं। पहले तो जब छोटी उम्र में रहते हैं तो दे फाइट फॉर देयर आइडेंटिटी, दे वांट टू बी नोन इन द स्ट्रीट, दे वांट टू बी नोन इन द प्लेस वेयर दे आर डूइंग, so they indulge in kind of outrageous activities which gets them some recognition. So it's a fight for recognition stage. Then recognition, once his identity is established, then he wants to make little money because his identity can't be sustained for a long time. So he wants to make little money, he wants to become rich. And then once he has money, then his quest begins for power. Because he's not happy with just money. A constable will come and scare him. So he wants to scare a policeman. He wants to scare his local authorities. So he wants power. And then he finds that all this is fine, but big decisions I can't take. I can't get it to influence the big decisions.
what can be these big decisions? It can be anything, in any form. एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे उसको कुछ ज्यादा पैसे बनाना है, तो he wants to take a government tender. Now, if he wants to take a government tender, he needs to influence the government. So उसका प्रयास फिर उस डायरेक्शन में जाता है. He collects his resources, his people, his everything to influence that, and ultimately it results in controlling the entire state. Imagine a country which is controlled by the criminal gangs. As you read more on this subject, perhaps one day you will be able to understand what I'm trying to say here. So, इनके different classifications we have. They start from street, then they come together, they become gangsters, then they specialize in something, then they become specialist gangsters, then they are racketeers. And once two racketeers come together, they form a syndicate. And then the syndicate coordinate with across the border criminal gang organizations, they become transnationals. And ultimately, they become the sovereign power of a country as a criminal gang. So they are criminals, their intent and actions are basically to the disadvantage of the common people, but at the same time, they are recognized as sovereign. They can sit with all good people also very comfortably. आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, एक बड़ी फेमस है, वो कोलंबियन ड्रग माफिया की फिल्म है नार्कोस, बड़ा एक्साइटिंग मूवी है और बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका जो क्रिमिनल है वो बड़ा ही धाकड़ क्रिमिनल है, वो सबको डरा के रखता है. So he tried to establish himself as a legislator. If you remember that, all the other legislators, they made him come out, pushed out. And in the process, he burned down the entire parliament of that. So, such is the power they acquire gradually. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने किए हैं, but it's there are too many points actually here. So, what kind of crimes they commit and what are their features when they become big organized criminals? A global map here, this you will find that most of the situations here are focused around when these big gangs they come together, they try to take advantage of countries where the formal legal structure is weak. When the formal legal structure is weak, when there is a tendency to cooperate with things which are wrong, or where there is an ability to tolerate where things are wrong, then these kind of creatures, they flourish and they make a lot of money and assume a lot of power. तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने देने की कोशिश की है कि उनके बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी रहते हैं और they indulge in things when they are trying to become really big and very powerful. एक छोटा सा एंटरटेनमेंट तो नहीं है, थोड़ा सीरियस ही है, तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब बंदर छोटे थे उसी समय दबोच हो, नहीं तो क्या बनेगा ये जाकर के, किस तरह का खूंखार अपराधी बनेगा ये कहना मुश्किल है. तो हमारी सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें we share with our young officers that when you are very young, ASP, so don't allow the criminals to have a say. Try and grab him as quickly as possible. अगर आप नहीं पकड़ोगे तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा, जिसको एसपी का हेडेक बनेगा, फिर एसपी भी नहीं पकड़ेगा तब वो रेंज का मतलब आईजी का हेडेक बनेगा, क्योंकि 2-4 जिले में ऑपरेट कर रहा है. और अगर आईजी ने भी उसको छोड़ दिया तो फिर वो डीजी का हेडेक बनेगा. तो डीजी साहब को उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके बारे में मशक्कत करनी होगी. और अगर डीजी साहब ने भी छोड़ दिया तो फिर वो पूरे देश की समस्या बनेगा. और कई एग्जाम्पल्स हैं जो सभी जानते हैं, तो एक आध नाम लेने में आज की तारीख में कोई हर्जा नहीं है. एक नाम तो दाऊद इब्राहिम का है, छोटा था तो लोगों ने छोड़ दिया उसको, छोटे आज वो इतना बड़ा हो गया कि he has been designated as the number 1. अब वो क्रिमिनल नहीं रहा, उसको बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 93 का, तो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी वजह से माहौल भी बहुत खराब हुआ. तो उसके बाद फिर
और भी बहुत सारी हरकतें की उसने। तो आज की तारीख में वो ओसामा बिन लादेन के बाद वही टेररिस्ट है, the global number one terrorist as designated by the United Nations। तो ये पिक्चर वही है। भाई पहले ही पकड़ लेते तो आज उसको वर्ल्ड को इतनी मेहनत नहीं करनी होती, अभी भी नहीं पकड़ा गया है। तो जब क्रिमिनल छोटा होता है तो हमारे पहला वाला जो पिक्चर है ऊपर वाला ना, दिस अ 5 फैक्टर क्राइम की, दोनों झगड़ा किए, उनको वहीं पे ठीक ठाक कर दिया कानून की तरह से काम वाम करके, तो उस चीज को संभालने में जरा ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल बड़ा हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए दिमाग को बहुत मेहनत करनी है, इतना आसान नहीं होता। तो ये चीज मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि when it is a 5 factor crime, it's easy to detect a case because you can detect the case by intuition, by your experience, by your learning in the classroom, by somebody sharing their knowledge. But the same thing, like a crime becomes a collection of crime, then your mind has to, it cannot work with intuition. It cannot work with somebody's help. It cannot work with somebody sharing their experience. It has to be at a very different level. And what is that level which helps your mind think in a much deeper way? So basically you are, when the variables in the crime become too many, then you are handling a very complex. The complexity starts rising. This happens in every field. It's a story of every area of knowledge. And the same stays for the crime and criminals. So when two factors come together, the collective value is far more than the individual value of the two variables. So ये basically कहता है कि when two variables come together in the field of crime as well, the impact of the crime is going to be far greater than the value. So now we're dealing with complexity of the criminality. So इसको, when you have more number of variables to deal with, then you have to work according to a plan. And what could be that plan? Many may not believe that in police science, because all along, our classroom teachings, our field teachings, our experiential teachings, every kind of learning has been based on something where it is brought in by somebody. There are very few situations where there is nothing around you, and you have to locate, you have to deal, you have to fight, you have to find ways. Then we have been found wanted. This is one area which really intrigued me for a very, very long time. And this case was one such case once again in my life, where I felt that nothing really works, nothing helps, no experiential learning, no intuition, no knowledge, no sharing, no depending upon your staff, no depending upon your seniors. You are absolutely clueless, because very rarely we try to break down the whole thing as a complex system, and we try to break it down into smaller variables, identify, segregate, and then learn about these variables and find your placing around those variables, and then you deal with it. So ये मेरा प्रयास रहा है कि 2009 से जो एक is a field of knowledge where I have been working. So I borrowed this knowledge from there, how to deal with a complex system, and I felt that the case in my hand was a complex situation. So basically, ये Godfather movie का एक scene है. So he is the man about whom you have been hearing. रवि पुजारी यही है. पुजारी जैसे कोई गुण नहीं है उसमें. खतरनाक अपराधी और भी कलाकार के पीछे है. तो मैंने सोचा आपको एक पिक्चर दिखा के इससे इंट्रोडक्शन कराई दी. ये इसके कुछ खासियत थी, इसके गुण.
दुबई का बड़ा डॉन था। इसके सिंडिकेट में 3000 मेंबर्स। तो एक कॉरपोरेट था, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जैसा चलता था। पहले दाऊद और छोटा राजन का सहयोगी था, और पहली बार इसको 1994 में इसको एक मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। एंड that was the time when his fingerprints were taken, and this one picture was taken which was in black and white, and that too in the name of clue I had a black and white picture with, you know, not a very clear photo, what you call photocopy picture. तो 100 से ज्यादा मर्डर्स के नाम पे हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको आप कहीं देख सकते हैं। 14,000 करोड़ का मालिक था ये। 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इसका, ये इंसान 14,000 करोड़ का था। और तीसरा सबसे रिच, पहला सबसे रिच तो नो मार्क्स टू द गेस, वी ऑल नो दाऊद नाम का एक इंसान है जो सबसे रिच है, इज अबाउट $6 or $7 billion. छोटा राजन was something around that, and this guy was then $2 billion. अब तो डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, रुपया कम हो गया, तो पता नहीं कुछ नीचे हुआ होगा। तो untraced since 1994 and no clue about his whereabouts. He had special fascination for film stars. सबको धमका के रखा हुआ था इसने, और पैसे निकालता रहता था। So these are some of his associates. I could not list out all his associates, but I could list out 66 of his associates. और उसमें एक जो लास्ट में एक नाम दिख रहा है आपको, वो सर के स्टेट में बहुत ही फेमस है, और उसने इससे बहुत काम करा है, विकी गोस्वामी। वो नारकोटिक्स का एशिया का सबसे बड़ा डीलर था, और इंडिया का, पाकिस्तान का और इस साउथ ईस्ट एशिया का नारकोटिक्स का सबसे बड़ा इंसान था। तो इसमें कोई भी छोटा नहीं है, नाम छोटा दिख रहा होगा आपको, हर इंसान अपने आप में बहुत बड़ा था। तो इसने कुछ जो इसकी कुछ काबिलियत जो हमने लिस्ट की है इसके विक्टिम्स ऑफ मर्डर, उसमें फिर किसको किसको इसने धमकियां दी। तो 40 में कुछ मंत्रीगण हैं, कुछ ये है वो है, संस्कार हैं, तो ये किसी को भी नहीं छोड़ता था। खैर इसको पकड़ा मैंने और फिर दुनिया के सामने लेकर आया है, like chasing a ghost. तो अब चलिए किताब की बात करते हैं। ये किताब में इसकी कहानी है और इसको पकड़ने की कहानी है, लेकिन ये किताब में कहानी, उसको पकड़ने की कहानी लिखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, करने में इंटरेस्ट था, अंग्रेजी आती है कि नहीं। तो मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, आपने भी बहुत लोगों का अनुभव रहा होगा। तो हमारे इंग्लिश के एक टीचर थे, मेरे पिताजी को लगा कि इसको अंग्रेजी आती नहीं है, इसको क्या नौकरी मिलेगी, भेजा जाए। हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे उनके पास भेजा उन्होंने। सच में मैं खिलाड़ी बेसिकली स्पोर्ट्स, मुझे पढ़ाई देखते भी नहीं आने लगती थी, कितना देखते ही। तो खैर पिताजी के कहने पे मैं टीचर के पास गया, तो उन्होंने कहा कि यार तुमको भगवान भी अंग्रेजी नहीं सिखा सकते हैं, मैं तो आम टीचर हूँ, एक ऐसा टीचर हूँ। तो कुछ मेरी अंग्रेजी के साथ मेरा वाकया कुछ ऐसे शुरू हुआ, और फिर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो हिंदी मीडियम से ही आया। मेरा एक साउथ इंडियन दोस्त था, बोला अमर हम हिंदी में ही बात करेंगे। लेकिन बोला यार my Hindi is better than your English. बड़ी बात, अंग्रेजी नहीं
But then I started to learn this language. And by God's grace, I could learn a little bit. So basically, this was an experiment with my own understanding of the language. And as Sir has given me grace mark and path today, so I think I have done my job reasonably well. वैसे आपके जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सर ने अभी तक उनको ग्रेस मांगने के बाद नहीं किया है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं तो now coming back to a few things about this I'm sure you will find it interesting and I would love that to learn about this whole detection because basically एक चोर सिपाही की कहानी है बचपन से हम लोग खेलते आए हैं तो ये ऐसी कहानी है और थोड़ा बड़ा था तो काम भी थोड़ा अलग ढंग से करना पड़ा मुझे इसमें सब लोगों ने मेरी मदद की जहाँ जहाँ भी जिस तरह से भी गया तो कुछ मेरी लर्निंग रही है किताब को लिखने में which I would like to share with young friends. मैंने इसमें जो कुछ चीजें मेरी लर्निंग पॉइंट्स रही that friendship helps solve complex issues और फ्रेंडशिप की बात जब आती है Amrit Legun is the best example of that. When I was a little lost for detection and I just didn't know where I'm going, except the fact that based on full understanding and the work that he was doing and the calls that he was making, and he was in different places on the same day. So the way he was able to influence his victims suggested that he was taking help of latest technology. It's quite good at that. But this gave one impression that he's definitely operating from abroad. And then when it came to things like abroad, I had to share it with my friends from the foreign service. So I thought of Amrit. I didn't know that he was heading the consular, he was the consular for passport and visa division. But I just called him randomly. And he said, oh, this is dealt in my section only. So I said, can you find out the person who has been abroad and can be traced if you have something in your database which will help pictures, data and information. So he said, okay, you send it, we will try. But of course, he knew that it was not possible. Things were not computerized the time when he left our country. And then my second question was that because I guessed that the person would not retain his Indian passport for so long, and he would have changed his name, and a lot of things would have happened. And then I said that is it possible to track a person who has gone abroad and changed his passport and taken some other name and has been able to manage to pass was creating false documents. So once again, it was quite a tedious thing, and Amrit said that we will try. And then we got one person's name, but of course that didn't take me far and had to withdraw. Then two young boys like you, just out from college, they have expertise because that was the time a lot of social reactions were coming in society with respect to citizenship and NRC Act and things like that. So we were monitoring social media for a lot of fake news and other things. That was the time when two young children came and they were training our policemen in that area. So just like that, I asked, is it possible that if somebody is trying to influence Paul's here, but he's at the same time in different places and can the country be tracked? Because I didn't know which country he's operating from. Calls were coming from all over the world except Antarctica. So you can imagine that there was no country he had left from everywhere.
And then they said, no, sir, if it can be done, and it's possible, and we have never come across anything like that. Though these two children, they had trained certain sections in FBI and IT tracking. So I said, okay, then we discussed for 2, 3 days, and then I had my own novice ideas to share with him. And then he came out, and in the meanwhile, something really interesting happened because most of the time he was making his calls from private number. So what happens, just to make you aware of it. So when somebody calls from private number, it doesn't show, the screen doesn't show which number the call is coming on your screen. Okay. So it will be blank. So he was making calls from private numbers. So obviously it was quite obvious that he's quite an influential person because private numbers are approved only for very select kind of people. So this was obvious that he's a very influential man wherever he might be. But in the meanwhile, he was keeping in contact with his victims. He was like threatening them and that. In one call, there are thousands of calls a day. In just one call, he makes a call where the country code appears. Just one call. It was plus 232. So I said, I shared this one with this boy. I said, can you track down that which area could it be coming from in that country? So they gave me a page, a sheet where they say that the call is from this country and this person is might be there because this is taking the tower that service providers thing, etc. So that was one very important clue that I got. Okay, this is Africa. This is Africa. This is a country in Africa. Now, sometimes things are very complex, but the solutions may be around you. You don't know how solutions appear before you. Something similar happened with me because while serving in United Nations, all our friends are here who all serve. One thing we feel very intensely, craving for Indian food, the food that you are used to. I thought है तो हिंदुस्तानी तो कहीं तो होटल जाएगा जहाँ इंडियन होटल में कभी तो किसी रेस्टोरेंट में गया होगा तो आप एक चीज ध्यान में रखिए यहाँ पे अभी तक जानते नहीं है हम कि वो दिखता कैसा है क्योंकि बात पुरानी हो गई है उसका फोटो वोटो की तो कोई इंसान होगा जो किसी होटल में जाता हो और चूंकि अफ्रीका दिख रहा है So I started doing my research with all the restaurants in Africa. You imagine there are only 61, 62 countries in Africa. And every country has 3, 4, 5, maybe more Indian restaurants. But still the number is a controlled number. It was not a very open-ended number. So with this control number, I thought, let me try. I was trying with travel agents, I was trying with all ticket booking agents, सब कुछ कर रहा था, tour operators, सबके साथ मैं काम कर तब से बड़े-बड़े डेटा आते थे, लेकिन कुछ भी उसमें मिलता नहीं था. हमने कहा एक होटल भी ट्राई करते हैं. So then we started trying for the hotels and all that. And that was the time I connected with Amrit. I said, Amrit, I want to connect with all the embassies in Africa. Send them a message. Then he drafted and he sent to all the embassies. So as it happens, now diplomats are diplomats, they're big guys. Young students, yeah, but diplomats are very big people. So none of them responded. Only ये कहाँ president से मिलना है, president से मिलना है, ये कहाँ ये चौक के पीछे पड़ेंगे तो nobody saw the message. I don't think anybody saw the message. But there was one gentleman. He was ambassador, high commissioner, Indian High Commissioner in Ghana.
him today, Mr. Virendra Yadav. I want to thank him. Mr. Virendra Yadav, he responded, sir, our GS has done it. And it's like this, sir. So I'll send somebody to check on that hotel. There are 2-3 hotels in Accra, and there's another place which I am Burkina Faso. So they don't have a consulate, but we want to manage their affairs. Then he came back and sir, there is one person by name Anthony Fernandez. And this Anthony Fernandez owned that one hotel there in partnership with somebody, but he's no more there. He left the country some years back and he is gone. So that was one information which came. That's it. Anthony Fernandez used to be there, he is not there. Who is this Anthony Fernandez? We don't know. After some time, he sent me a paper clipping about the same Anthony Fernandez. That Anthony Fernandez, along with his wife, Pamela, she is distributing sweets and clothes to poor people on the occasion of Navratri. So Pamela and Anthony Fernandez and Navratri and sweets and clothes didn't match. And they are seated along with the minister, cabinet minister of the country. So my guess earlier that the private number calls, and I knew that his influential man was proven that some big man and cabinet minister. But this Navratri and sweet and Anthony name is not getting along. So I kept that in mind. Okay. And now these boys come after that, and then the name of Senegal comes. So on the map, Burkina Faso and Senegal, they are close, West Africa. So quite possible that the man has moved by road or something to this place. And we had sent our friend Anuj Arya is here. I troubled him post midnight around 1:30 to 2 o'clock midnight because I didn't need to lose a minute. He was getting Interpol there. Arya sir. तो मैंने इनको मैसेज भेजा, तो इन्होंने कहा ये रेड कॉर्नर नोटिस के मैसेज बहुत आते रहते, ये भी एक आया होगा, ये छोड़ के चुप होके बैठ गया। तो अरे अच्छा मैं जानता नहीं था ये अनुज आर्य जी हैं, तो क्या एसपी इंटरपोल हैं, तो कुछ तो रिस्पांस करेंगे, but there was no response because he was burdened with so many things about Interpol. Once again, a friend came in handy, Mr. Ajay Bhatnagar, I want to remember it today. He was in CBI, and Ajay and I were together in Delhi School of Economics. So I called him, I said, "Yaar, Interpol ka kaam hai, tumhara CBI mein kaun hai, internet." Then the joint director तो उन्होंने अनुज जी को कहा कि भाई सरकार से फोन आया था बात, तो फिर अनुज जी का फोन तब मैंने बात शुरू की और इसको पूरी लंबी कहानी अपने स्ट्रगल की बताई मैंने। उन्होंने कहा सर आप ये रात के 2:30 बज रहे हैं, आप कितने बजे सोते हैं? बोले यार सोना छोड़ो, मुझे नींद नहीं आ रही है, इज्जत की पड़ी हुई है और हमारी इज्जत दाव पे है। मैडम हमारी जो डीजी मैडम थी, शी वाज अ लेडी ऑफिसर, नीलमणि राजू, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर टू बी द डायरेक्टर पुलिस स्टेट, शी हैड असाइन्ड मी दिस जॉब। वो तो रोज सुबह मुझे यही पूछती थी कि अच्छा कुछ प्रोग्रेस है क्या, ऐसे नींद नहीं आती, मतलब कुछ करो इसमें क्या है। बोला बताइए सर क्या करना। हमने कहा बुर्किना फासो को एक आरसीए नोटिस भेजना है, रिन्यू करना है, आरसीए
next day. No country would respond because there was no Ravi Pujari. We are sending message RCN mail, the name has to be written. And we are sending the name Ravi Pujari. Ravi Pujari has changed his name long time back. He's not there. So Interpol would send to those countries, whatever countries will be, and then those people will do the normal check and send back, no, there is Ravi Pujari. So same thing happened with Burkina Faso. Mr. Anuj Arya, the same morning he sent the red carbon notice, renewed it, and sent it to Interpol. Interpol sent the same day they transmitted to Burkina Faso. And after 1 month, Burkina Faso sent it back to us saying that there is no Ravi Pujari. And once again, there's a black. So first we have to know what is the name Ravi Pujari has taken in a new country. So that was the challenge. So तो RS आपके साथ रात में डिस्कस होती थी बात आगे बढ़ी. So third point was what I price of this detection that this orange Sonatel thing came into the picture and I saw Senegal. So I tried to connect Anthony Fernandez in Burkina Faso distributing sweets and clothes to poor people on Navratri, and next threat call is coming from Senegal. Senegal is not far. Then I requested Amrit that please connect me to Senegal. Then we met Mr. Rajiv, and Rajiv was the ambassador there. And so Rajiv ने एक बहुत बढ़िया कहानी बताई. आपने मैंने पार्टी दी थी अपनी एम्बेसी में और पार्टी में बुलाया था. तो एक बंदा आया था वो बड़ी काफी ज्वेलरी वगैरह पहनी, उसकी वाइफ भी बहुत ज्वेलरी पहनी थी और उस दिन सब लोग थे पार्टी वार्टी ही फिर चले गए. फिर वो रात में 2:30 बजे आए, बोला उसकी पत्नी का झुमका गिर गया लॉन में घूमते फिरते, झुमका एक गिर गया और झुमका डायमंड का है. वो खोजना चाहता है, उसके गार्ड ने उसे बताया. बोला खोजने दो, लेकिन वो खोज रहा था 2.5 घंटे उसने जिसका खोजा, झुमका तो मिलना नहीं था. कहानी राजीव ने मुझे बताई. राजीव भी बिहार से ही है, तो हम दोनों बिहार की बातें करते थे. और तो फिर उसमें मैंने कहा यार ये बंदा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये झुमका गिर गया रात में 2:30 बजे झुमका ढूंढने आया और जिसका झुमका गुम हुआ है वो नहीं आई, ये उसका पति ढूंढने आया. उसको कैसे मिलेगा झुमका, उसको क्या पता है पत्नी कहाँ. मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको देखो. और नहीं बोले सर वो एक महाराजा होटल है, उसका मालिक है, मेरे टीम के साथ खाने गया. to come close to me, but I didn't like it. तब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है बंदा यार ये ढूंढता. फिर मैंने रिलेट किया वहाँ होटल यहाँ होटल, तो ऐसे कुछ चीजें जुड़ती गई. कनेक्टिंग द डॉट्स. एंड फिर मुझे कॉल आया राजीव का कि सर एक क्रिकेट मैच हो रहा है इंडियंस का और सेनेगलीज का, और इस क्रिकेट मैच में वही बंदा चीफ गेस्ट है. पर्सन he has only sponsored the whole thing, is the chief guest there. तो हमने कहा यार इसका ये पता चल सकता है क्या क्या. बोला सर मुझे मालूम नहीं, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सभी इसके आगे पीछे घूम रहे हैं. तो उसके पास कुछ लोग वहां जैसे फोटो खींचते रहते हैं ना, तो कुछ फोटो खींचा हुआ था उसके पास. उसने मुझे एक फोटो दी. तब मुझे थोड़ा दिमागी तौर पर प्रयास करना पड़ा. I started, I looked at his very before picture, that was this picture which I showed you. So I started matching उसका jaw line, ये जो anthropography में हम करते हैं, anthropometric में करते हैं, तो थोड़ा बहुत that, but still I was able to say because it was a speaking there. सहारा क्या है
एक ट्यूशन से मुझे लगा कि बोलते हैं कि इसको ऑब्जर्व करें। तो उसके बाद ही बस वो करके सर्विलांस, फिर वो जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन उसका डिनर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति, तो उसने सोचा थोड़ा कलर वलर करा ले, उसी के लिए वो सैलून गया हुआ था। तो फिर क्या करना है, because police is also getting restless, they have to pick him up or leave him, because you can't keep chasing a person abroad, and that too a super rich man who's area of who's a holder of diplomatic passport. He was holding a diplomatic passport. So that is the situation. Then this clue and I said just call him by his name, and if he responds to the name, then absolutely it is confirmed. तो उन्होंने कुछ वैसा ही किया, नाम उतारा तो मुड़ के देखा तो फिर उसको उठाया, फिर ले गए, फिर बातचीत हुई और फिर उसके बाद एक्सट्रेडिशन का बड़ा लंबा प्रोसेस चला। तो ये सारी चीजें हैं जो इस कहानी में हैं। जरूर अच्छा लगा। Thank you so much for my apologies for overshooting the time. Happy birthday. So much, sir. And now the most affected moment that I am released. I would like to give this case and very most affected both. But down by how much funding. Now, may I please request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. M. Shah, to deliver the presidential remarks. Good evening to all of you present here. Distinguished Chief Guest Sri Manoj Yadav, IPS Director General Radio Protection through Ministry of Railways, Government of India. Special Guest Sri Rakesh Afghani, former Commissioner of Police, Delhi. Dr. Amar Kumar Pandey, the author of the book. Dr. Amrit Dugan, IFS ex-ambassador to India and Greece. Registrar, DSW, and the galaxies of DC, Director General of Police for various states, and a lot of other services officers present here, faculty members, dear students. Today we gather to recognize an extraordinary work that exemplifies the dedication and professionalism of Indian Police Force, a dawn nemesis by Dr. Amar Kumar Pandey, IPS, the chronicle a remarkable achievement in international law enforcement, a testament to the capabilities of Indian policing. This book documented a watershed moment in our law enforcement history, a 24-year pursuit that culminated in the successful extradition of wanted criminal from Senegal to India. What makes this case particularly significant is that it demonstrates India's growing capability in international police operations, even when dealing with non-treaty nations. The value of this book extends beyond its thrilling narrative. It provides crucial insight into the complexity of transnational crime,
the evolution of criminal enterprises, and the sophisticated methods required by a modern law enforcement to combat them. This knowledge is invaluable of our police force as India continues to strengthen its position on the global stage. Our police force represent the backbone of our internal security and the rule of law in an era where the crime knows no border, and the professionalism and determination shown by the officer like Dr. Pandey highlights why a continued investment in our police capabilities is crucial for our national security and development. This book serves as both an educational resource and inspiration. It shows our young police officers that with dedication, expertise, and perseverance, even the most challenging case can be resolved. Moreover, it demonstrates to the world India's commitment to upholding the international law and justice. Let this book stand as a reminder of the vital role of our police force play in maintaining law and order and growing capabilities in tackling international crime. The success documented in these pages should inspire us all to support and strengthen our law enforcement institution for a safer India and more secure world. Thank you. इससे पहले कि हम लोग स्टोरीलाइन के आखिरी हिस्से में घुस जाए, ऑडियंस से दरखास्त है कि अगर वो कुछ कहना चाहें, until unless we do not read the book, so we invite few of your comments. Can we have the during tea वगैरह time मुझे तो बताना है तो पहले नहीं ठीक We move towards the end of this wonderful evening. I would like to request our Honorable Registrar, Dr. M.A. Sikandar sir, to please come forward to deliver the vote of thanks. Very good evening. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor sir, today's chief guest. Journalist, ATS, DG, RPF, and our respected Rakesh Asthanasan, former Commissioner of Police. And he is former of so many positions, including his assignment, apart from assignment in the Delhi Police. Today's Kathanayana, I'm a Tamilian, so we call it Kathanayana, who is the author of this book, Amar Kumar Pandey. So this is a very, very honorable dignitaries are here. It's not a formal function to give a formal vote of thanks, but after many years, I left National Book Trust in 2015. Again, I'm part of this book release program. It's my role reversal is happening. So I thoroughly enjoying it, although I slept at 4 o'clock in the morning. Still, I am very energized because of this, in which I was involved in. What happened? This is a chronicle. The nemesis. Normally, in the university system, we call the deans as a dawn. So here, the police is catching. So this is a chronicle and a very interesting thing, and showing how organized criminal could be captured. What are the पर्दे के पीछे क्या क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कि पकड़ लिए. ऐसे एक रात में जाके. Here there is a whole lot of things, and there are faceless people who are created. There's no one king. It's rightly put up. ये तो चोर सिपाही का कहानी है, ऐसे नहीं है. और उस सिपाही की कहानी के पीछे बहुत सारा है. देश का नाम भी इसमें इन्वॉल्व है. We happen to work with so many greatest officers in different countries. We have an book related program. We started a book diplomacy during in this period. We start how we project India as diplomacy is going to strength as intellectual capacity. It should not happen. Whenever any Indian night is happening, only in the bottom it's straight away in the night hacking. The same thing is happening in the Delhi. French, they are showing their smartphone. So this is an even
you should not take it like a book discussion. It is a learning experience for younger students as well as our law faculty teachers and the students. To how the criminal laws, what they are teaching, how it can be applied. That this is going to be an experiment for a case study for the police, real police officer, how this can be decoded. And I think this is a for me as a teacher of the Navy, for me it's a case study and how the case study write the character. The very interesting thing is two of the characters, three of the characters are not here. This is a coincidence. We don't know. The local service happen to be here. This is a very interesting thing. I enjoy. We hope we also enjoy. But every good things come to an end. This is a great moment. The credit goes to the literary club and the entire team, DS and great. सर मुझे भी समझ में नहीं आता उर्दू में बहुत कुछ बोलते हैं मैं उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ मुझे भी मेरे सर पे जाता है मुझे भी पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ this is a great thing for us and such event will what the university where what the student is looking for in university is something is different and a variety which can enrich his outlook as a individual when he is passing out. So such events should be frequently organized and also bring we have a civil service DHRC academy students also here and presence of so many civil servants here large number may inspire them to join take up their civil service. We take every advice given by the speaker we appreciate. I have noted down I will give to them writing the end of the day. Thank you very much sir for all coming here. Thank you. Just like to acknowledge the effort of all the people who were involved in the organization of this event. I would just request all the organizers, Dr. Meher, Dr. Kalpana, Dr. Khurshid, Dr. Char, please come forward. Please give them a big tap. Please. प्लीज सर आप आइए आइए आपका बगैर नहीं है अभी नाम लेना पड़ता है अब आ गया ब्रेक I will request the student volunteers to please come on the desk. So all grants for the national anthem. जनगण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना उत्कल जलधि तरंगम
Thank you for being part of this celebration. Please join us for the Higher